So hello everyone and guys, welcome to your another important session regarding the government schemes. So I'm assuming that all of you have watched the pension schemes as well as the other schemes that we have covered on our government scheme session for your upcoming examination cycle of the year 2025 here. We have covered the pension scheme in the past 2 weeks where I've discussed with you in the previous session that the next session that I will be bringing will be a session of the previous questions that have been asked from the pension schemes, and the examination I've covered is RBI, SEBI and NABARD here, and the examination cycle is from 2021 to 2024 because we have seen in the case of RBI and NABARD specifically the examination pattern changed from the year 2021 onwards. Now व्हाट्स द पर्पस हियर? मुझे लगता है कि आपने सब स्कीम पढ़ी है, अब आपको सिर्फ देखना है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं और क्या पूछा जा सकता है इन फ्यूचर, हमें वो आइडिया यहां से आज लेना है. एंड व्हाट वी विल डू, आई विल आस्क यू द क्वेश्चन, विल गिव यू 20 seconds. जस्ट वन थिंग, प्लीज टेक अ नोटबुक विद यू, सॉल्व द आंसर्स एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप सबके 9 out of 9 मार्क्स आएंगे बिकॉज 9 ही क्वेश्चंस हमें मिले इन स्कीम्स के ऊपर. बट अगर किसी के नंबर कम आ रहे हैं सो डू लेट मी नो अबाउट दैट आल्सो इन द कमेंट सेक्शन बिकॉज चीजें पढ़ी हुई हैं उसको बस एग्जीक्यूट करना आपको आना चाहिए. चलिए जी, लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन आस्क्ड इन द नाबार्ड ग्रेडेड 2021 एग्जामिनेशन, दैट्स ऑन अटल पेंशन योजना. क्वेश्चन पूछा गया कौन सी स्टेटमेंट सही है. हियर आर 3 स्टेटमेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू. आई वुड से इट्स एन इजी क्वेश्चन. ठीक है, the questions that we witnessed on Atal Pension Yojana NPS, they are quite easy. It's not that they are out of the box. Only thing is if you know the basics, you can solve these questions. So applicability 18 to 40 years. Then fixed pension is ranging from 1000 to 5000, absolutely right. Then it says death of subscriber, the spouse of the subscriber is not eligible for subscription. That is wrong here. We've discussed about that thing in the session. पढ़ा था ना हम लोगों ने कि भाई अगर आपकी डेथ हो जाती है तो जो स्पाउस है उसको पेंशन मिल जाती है. ठीक है, ही इज नॉट, ही इज एलिजिबल, ही और शी इज एलिजिबल फॉर सब्सक्रिप्शन आल्सो. सो आंसर क्या बन जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 will be the right answer here. And guys, if you have not watched the video, so in the end of this video, what you will see is you will see on the right hand corner the playlist of the government schemes. Please click on that playlist, save that playlist for you, and you will see the schemes ranked in that order. पहले श्रमयोगी मानधन आएगी, फिर किसान मानधन योजना आएगा, फिर आपका यूनिफाइड पेंशन स्कीम, नेशनल पेंशन सिस्टम और फिर आ जाएगा आपका अटल पेंशन योजना. ठीक है, सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2. इफ इट्स राइट, गिव योरसेल्फ अ 1 mark here. चलिए अगला क्वेश्चन आरबीआई ग्रेड बी 2022 एग्जामिनेशन के ऊपर है, फिर अटल पेंशन योजना पे आया. इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन. मंथली प्रीमियम मेड बाय इंडियन सिटीजन एट द एज ऑफ 18 years, if he or she wants to get a 5000 monthly pension, what is the contribution he has to make? We've discussed about that also. Contribution I've discussed with you. ठीक है ना, 42 रुपीज है, 210 रुपीज है, 426 रुपीज है, हमने डिस्कस किया था ये वाला क्वेश्चन. इसका आंसर क्या बन जाएगा? 210 रुपीज, ऑप्शन नंबर बी. एंड आई एम अज्यूमिंग ऑल ऑफ यू हैव गॉट दिस आंसर राइट. ठीक है, कितना आता है? 210 रुपीज. चलिए, तो इजी क्वेश्चंस यू विल सी गाइस दिस सॉर्ट ऑफ थिंग कि यहाँ पे बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछा गया. इजी है तो काइंड ऑफ हम लोग को ये थोड़ा सा रिलैक्स होना चाहिए कि क्वेश्चन इसमें बहुत इन डेप्थ नहीं आए हैं अभी तक. हाँ जी, अगला है मिनिमम मंथली पेंशन दैट वुड बी रिसीव्ड to the subscriber under the श्रम योगी मानधन. That also we discussed with you. श्रम योगी मानधन ये नाबार्ड ग्रेडेड 2019 एग्जामिनेशन में आया था. ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैंने इसलिए लेते बिकॉज SYM इज अगेन इंपॉर्टेंट. नाउ कौन से कितना देता है मिनिमम पेंशन, हमने कल ही पढ़ा है पिछले सेशन में. व्हाट इज द अमाउंट? दैट इज absolutely right guys, option number 3, 3000 is the right answer here. 3000 rupees minimum pension is assured, that is under श्रम योगी मानधन. किसान मानधन योजना में भी 3000 की पेंशन मिलती थी. अटल पेंशन योजना 1000 to 5000. NPS nothing is given here. Unified pension system minimum 10,000 will be given. Then if you have covered 25 years of service तो आपको 50% of the बेसिक पे प्लस डीए जो होगा आपका पिछले साल का एवरेज, उसका आपको उतना आपको पेंशन मिल जाएगा. ठीक है, और एनपीएस में जो है आपकी पेंशन डिफाइंड नहीं होती है. चलिए अगला क्वेश्चन है अगेन श्रम योगी मानधन के ऊपर 2022 एग्जामिनेशन, दैट्स ऑफ नाबार्ड एग्जामिनेशन. तो पीएमएसवाईएम इज अ वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम. ठीक है जी, फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन द एंट्री एज ऑफ 18 to 40 years, where they will be getting a monthly income of less than 5000, they will be getting a pension here.
Which among the following is the fund manager of the Shram Yogi Mandhan? A very, very important thing, guys, because when you see these sort of questions, it looks pretty easy because we have just covered. But जब आप एग्जाम सेंटर में बैठे तो बच्चा कहता है सर मुश्किल क्वेश्चन आ गया. क्यों? क्योंकि हमें तो पीएफआरडी से कंफ्यूजन हो जाता था. यहाँ पे पीएफआरडी ऑप्शन में नहीं था, तो आपके लिए आंसर काफी इजी हो जाएगा. बिकॉज फॉर पीएमएसवाईएम and for Kisan Mandhan Yojana, we know that the implementing agency is Life Insurance Corporation of India. That will be option number A is the right answer here. Okay, ji. Let's look at next question. That's on Kisan Mandhan Yojana asked this year in the RBI Grade B examination. A very important scheme, Kisan Mandhan Yojana. It provides the social security to the land holding small and marginal farmers through a voluntary contributory pension scheme. Guys, this is a question that I have asked you as a homework question also when we have covered the Kisan Mandhan Yojana. Same question. पूछा गया है, consider the following ineligibility criteria. Which among the following would be ineligible? What they've asked is who is not eligible here. So let's look at the thing. A farmer who is a beneficiary of PM Kisan scheme. Absolutely right. Farmers with a land holding of 1.78 hectare. बिल्कुल सही, क्योंकि 2 हेक्टेयर से कम लैंड होनी चाहिए. That is right. A farmer age 42 years. That is wrong because answer is it is 18 to 40 years. So answer बन जाएगा option number A. Third is the incorrect statement here. I hope you are clear about this thing also. Let's move towards the next question. That's on National Pension System, NPS. Question has been asked this year in the phase 2, also in the phase 1 also. Let's look at the question on the phase 2. So NPS के ऊपर question आया था कि which among the following is eligible to apply under the National Pension System. Ramesh, एक Indian citizen जिनकी age 25 years है, applying under the All India Citizen Model. Then Suresh, a person of Indian origin, age 30, currently living abroad. Geeta, employed by a state autonomous body, joining the services after the respective state government's notification. And Priya is an overseas citizen of India, age 40, working in an international organization operating in India. So who among the following is eligible? They have asked you a question. Case study based questions are very, very important. And this year also they have asked you case study based question in the phase 2 examination. If you know the basics of the scheme, तो आप इनको कर लोगे. अब यहाँ पे पूछा देखो आपसे क्या गया, सिंपल चीज हमें क्या देखना था, ये वाला वर्ड PIO. We know that persons of Indian origin, Hindu undivided family are not eligible for applying under the National Pension Scheme because ये third party account आप नहीं खोल सकते हो. That is the reason given here. Third party account नहीं खोलेगा तो आंसर क्या बन जाएगा? 1, 3 and 4 is the right answer here. Option number B. Okay, so I am assuming guys आप सबको चीजें समझ आ चुकी हैं. You all are aware about this thing. So this is the basics you need to cover. Okay, चलिए. Let's move towards the next question that has been asked this year in the phase 1 exam. देखो NPS पे phase 1 में भी क्वेश्चन है, phase 2 पे भी क्वेश्चन है. अब phase 1 पे क्वेश्चन क्या है कि as per the national pension system, partial withdrawal can happen 3 times during the tenure of a subscription. ठीक है जी, आपको बताना है if the subscriber has completed at least 3 years from the date of joining, what is the beneficiary? कितना withdraw कर सकता है? We have just seen in the NPS the amount of withdrawal that we have discussed. कितना हो सकता है? ठीक है जी, तो कितना कर सकता है 3 साल के बाद? 25%. Option A will be the right answer, 25% here. Normal exit 10 years is there, but we know that 3-year condition is given here, that's after 65 years of age. And what's the amount they could withdraw? That is 25% withdrawal is being allowed here. So that is about this specific thing. ठीक है जी, that has been asked this in the examination of RBI. Let's focus towards the next important question that has been asked again. Now you will see this year, National Pension System or National Pension Scheme is one scheme which was asked almost in every examination. You could talk about IFSCA, you could talk about your RBI, NABARD, सबने पूछा है. तो इस साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुकी है और ये स्कीम्स आप देख रहे हो काफी इंपॉर्टेंट है. ऐसा नहीं कि कई बार क्वेश्चंस आ रहे हैं बिकॉज दे कैटर टू अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर ऑफ योर social security. ठीक है, that's they are catering to farmers, the senior citizens, or catering to the social welfare. That's the pension part here. So which among the following is not an intermediary under the national pension system? Now that is not an intermediary. You might feel कि सर ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है तो कैसे करेंगे. अब आप इसको कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना. First give me your answer and then I will tell you what is the answer. What should be the answer here? See, they have asked you EPFO, point of presence, trustee banks, pension funds, central record keeping agency.
Now Central Record Keeping Agency, every one of us know, they are absolutely right. तो CRS तो यहाँ पे आंसर नहीं होगा. Pension fund managers, obviously you could apply under the pension fund manager also, so that should also not be the answer here. Trustee bank, अगर आपको अपना NPS अकाउंट खोलना है या आपको अपना NPS ऑपरेट करना, you will be operating through your bank, so banks will be playing a very important role in operationalizing the NPS, so that is a thing wrong. अब आता है पॉइंट ऑफ प्रेजेंस. POPs तो absolutely होंगे ही होंगे, बिकॉज इट्स नॉट ना, कुछ ऐसे पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस भी होते हैं जहां पे जाके आप अपना एनपीएस का अकाउंट खोल सकते हो. इट्स बीन गिवन बाय द नेशनल पेंशन सिस्टम, ये बोला गया एनपीएस टेस्ट के थ्रू, यू कुड ओपन देयर. तो पॉइंट ऑफ प्रेजेंस शुड नॉट बी द आंसर हियर. नाउ कॉमन सेंस के लिए, इफ यू टॉक अबाउट ईपीएफओ, ईपीएफओ इज नॉट एन इंटरमीडियरी टू द नेशनल पेंशन सिस्टम. ईपीएफओ एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम रहेगा, ईएसआईसी को की थोड़ी सी बात करेगा, बट ईपीएफओ पेंशन की इंटरमीडियरी नहीं है. इट्स नॉट एन इंटरमीडियरी अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम. ठीक है, तो दैट इज व्हाई द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. ये प्रोविडेंट फंड की बात कर रहा है, पेंशन फंड की बात नहीं कर रहा, या डिफरेंट फंड्स. ठीक है, सो इट्स टॉकिंग अबाउट पेंशन प्रोविडेंट फंड, सो इट्स अ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. इट्स टॉकिंग अबाउट द प्रोविडेंट फंड दैट यू हैव अप्लाइड, so that is why it's not an intermediate in NPS. So answer will be option number A, EPFO is the wrong answer. Okay, so this is about the questions that have been asked. Let's talk about the next important question that has been asked on Shram Yogi Maan-Dhan, that has been asked this year. It says Shram Yogi Maan-Dhan provides a pension to the unorganized workers earning less than 15,000. Which of the following is eligible age group? Again, a basic question being asked on Shram Yogi Maan-Dhan. So eligible age group is simple. It's option number C. 18 to 40 years will be the right answer here. Okay. So this was about our questions, a short form of a summary, because सेबी पे अभी पिछले 2 साल से हमें पेपर 1 में, फेज 1 में क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले हैं. एनपीएस और एपीवाई, और या फिर बोलो यूपीएस तो अभी बिल्कुल ही नहीं आई है. एनपीएस, एपीवाई, यूनिफाइड पेंशन स्कीम, वी कैन टॉक बिकॉज वी हैव नॉट सीन अ क्वेश्चन इन द पेपर 1, फेज 1 पेपर 1 की मैं बात कर रहा हूं. ठीक है जी, नहीं देखने को मिले हैं. पेपर 2 मैंने अभी नहीं देखा है, तो वहां पे अभी हम we have not picked the question from phase 2 of this SEBI. But the important point here, if I talk about guys here, is that this gives us an idea that what sort of things we need to focus on. It's not something that I would say just focus on the age group or the eligibility only, because eligibility is important. Then we have seen in the questions that key features, they have asked you a question also. Eligibility, कौन eligible है, कौन नहीं है. तो आपको जो basics of the schemes हैं, you should have an idea. Ministry of Finance, it's not something that you need to remember. PFRD, NPS, APY, everybody know PFRD is an implementing agency. But for Shram Yogi Maan-Dhan and Kisan Maan-Dhan Yojana, LIC is a difference here, so you need to remember about that thing. Then the important point is about the eligibility criteria for all these schemes. That's very, very important because they are being asking questions on those things. Then exit or withdrawal purpose that we've discussed. Please have an understanding of that thing also. और जो बेसिक फिजिक्स हमने पढ़े हैं, बिकॉज अभी क्वेश्चंस आपको बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे मिल रहे हैं, तो बहुत घुमा के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं. बट एक चीज जरूर है कि जैसे जैसे एग्जाम इवॉल्व हो रहा है, तो यू आर सीइंग समहाउ दे आर नॉट गोइंग दैट मच इन डीप, बट दे आर ऑलवेज टेस्टिंग योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्कीम. So I am assuming, I will again request all of you guys, if you have not watched the videos on the pension scheme that I have discussed, please watch those videos, because that will be playing a very important role in your examination, because they are being asking questions on these pension schemes. Not on every, but somehow कोई ना कोई pension scheme हर साल हमें देखने को मिल रहे हैं in the examination. And also do let me know in the comment section that how you have liked this specific initiative, or I can talk about this specific video with regards to the previous questions on the pension schemes. And further on, we will going with the next important set of videos on the next important set of ministry. उसके बाद अगर उन पे PYQs बनेंगे, तो उनके PYQs भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. So if you like this thing, do let me know about that also in the comment section. And if you are new here, please subscribe to our YouTube channel. Please press the notification button so that you get notified about all the important videos that we are providing you with regards to your examination on the channel. And for PDF, please subscribe to our Telegram channel, the link for which is given in the description below. Now, if you have again any sort of doubt, you could tell me about that in the comment section also, as well as you could also let me know about that also in the by dropping me an email, that is at hello@tab.co.in, or you could have a call with me on the number 814620724.
1. So on this note, I will be ending the session here and will be signing off and will be meeting you in the next session of the government schemes. So till then, keep working hard, keep preparing hard.